Millennium to power millennium. Good morning, Namaskar. This is Suraj Singh speaking from Bharat, India on this day, April 27, 2022. Wednesday, 3:49 AM. नमस्कार, मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया बोल रहा हूँ। आज अप्रैल 27, 2022, बुधवार सुबह के 3:50। My title of talk, as usual, is same, and that is requirements, and that is quality requirements. Hindi, English, coordination. This is engineering way, only way. Projects, works, designs, contracts, reliable engineers, power of communication, concrete specification, civil engineering, SHE methods. कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, something like that. Because it's mixed talks, I want to let people of those who try to understand Hindi, let them also benefit from this. Some part is in English and some part is in English, like that. हिंदी बोलना भी आवश्यक है क्योंकि हिंदी भी काफ़ी जगह बोली जाती है। भारत के अलावा भारत में भी काफ़ी जगह गल्फ़ के अंदर बोली जाती है और मिडिल ईस्ट में भी कुछ जगह बोली जाती है। वर्कर्स बोलते हैं हिंदी ज़्यादातर लोग, और कुछ हद तक बोलते हैं अरबी भी। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको मिक्स करके बताएं। टाइटल है रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं। कोऑर्डिनेशन क्या है, समन्वय क्या है। अभियंत्री ही एक रास्ता है। और योजनाएं क्या होती हैं, डिज़ाइंस किसे कहते हैं, समय कॉन्ट्रैक्ट करार क्या होते हैं, और वास्तविक इंजीनियर क्या होते हैं जिन पर निर्भर किया जा सके। संचार का क्या मतलब है, और कंक्रीट क्या होती है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, कैसे बनाई जाती है। और सिविल अभियंत्री सब सेफ्टी, सुरक्षा के कैसे सही तरह से सही रख कर काम कराया जाए, और कोई भी झगड़े होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उन्हें कैसे हल किया जाए। ये हमारा है। इससे पहले मैं आपको आप देख लीजिए मेरा ये बोर्ड, सूरज सिंह FI, चार्टर्ड इंजीनियर, इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर, आर्बिट्रेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, and suraj_engineer@yahoo.co.uk. I repeat, suraj_engineer@yahoo.co.uk. This is my email ID. ये मेरी email ID है। If you want to write to me, you can use this email ID. There is no problem. I shall be glad to answer you. अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न करना है, आप इस email ID पर suraj_engineer@yahoo.co.uk पे अपने प्रश्न भेज सकते हैं, और मैं इसकी समझ के सही तरह से आपको गाइड करूँगा। यही मेरा बोर्ड का मतलब है। मैं फेलो हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का, मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ भारत का, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल अभियंता भी हूँ, और आर्बिट्रेशन इंजीनियर भी हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग में काम करता रहा हूँ। और ये मेरे सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। दिस इज़ माई आर्बिट्रेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट, जो मुझे मिला। आई गॉट अवार्डेड दिस ऑन 4th of April 2022, though I was qualified for this also before, but I did not apply. And this is International Professional Engineer Certificate, which is always valid for 5 years only. And this is Chartered Engineer Certificate, and then quality file, concrete file, and this Chartered Engineer Certificate close, and arbitration file I close. And then we have quality issue, which is very important, जो बहुत important है हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। क्वालिटी, इसको हिंदी में गुणवत्ता कहते हैं। बिना गुणवत्ता काम करने का मतलब सब कुछ ख़राब करना। भारत देश, इंडिया बोलना चाहता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत ख़राब है। वी हैव टू इम्प्रूव इट, देयर इज़ नो, हमें सुधारना ही होगा। वी शैल हैव टू इम्प्रूव, देयर इज़ नो अदर वे। अगर हम इसको नहीं सुधारते तो अपना नुकसान करते हैं। इफ़ यू डोंट इम्प्रूव दिस, वी मेक आवरसेल्व्स डैमेजेबल। एंड पर्टिकुलर उन लोगों को जो यंग हैं, इंजीनियर्स हैं, जो देश में रह रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा अपने आप को सुधारो, इम्प्रूव योर सेल्फ, ऑल दोज पीपल, यंग इंजीनियर्स एंड एवरीवन हु इज स्टेइंग इन आवर कंट्री, दैट क्वालिटी शुड बी योर गोल। Quantity, I know quantity is your goal, but quantity means quantity with quality, and if you can't understand this point, you make a mistake. अगर आप क्वालिटी को नहीं समझते, गुणवत्ता को नहीं समझते, कोऑर्डिनेशन को नहीं समझते, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ़ पीपल डोंट रियलाइज क्वालिटी, व्हाट इज़ क्वालिटी, हाउ इट इज़ कंडक्टेड, हाउ शुड बी डन, व्हाट्स वैल्यू ऑफ क्वालिटी, और तालमेल, कोऑर्डिनेशन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाउ इट इज़ डन, व्हाट्स वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट्स गोल यू कैन अचीव इफ यूज कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट or not important. All these you have to decide, and coordination is only way to collect information, right spread. It's not only engineering, otherwise also in life, quality and coordinations are very important. If there exists no quality and no coordination, then you are nowhere. अगर आपकी ज़िंदगी में भी, जीवन में भी गुणवत्ता नहीं है,
तालमेल नहीं है तो आपका जीवन भी बकवास बन जाता है, आपको नहीं समझना चाहते कहाँ जाना है। यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड वेयर हैव टू गो, व्हाट्स योर डायरेक्शन, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, व्हाट्स द टारगेट पॉइंट दैट यू हैव टू नो बिफोर डूइंग एनीथिंग। बिफोर जस्ट वॉकिंग इज नॉट एनफ, walking on good surface and walking on right track in the right direction is also important. Where do you want to go? You can change your destiny, you can change your everything, provided you know if you are going wrong direction or you want to go somewhere else. That's what quality and real coordination will tell you. Real quality and real coordination, वास्तविक quality और वास्तविक तालमेल से आप आगे जा सकते हैं। यू कैन गो वेयर ये, दैट्स वाई से यू एंड आई गेट अप फॉर रियल क्वालिटी। मैं कहना चाहता हूँ आप भी उठिए और मैं भी उठता हूँ रियल क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए, गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए और तालमेल बैठाने के लिए। हर काम में वी हैव टू सेट आवर सेल्स इन अ गुड कोऑर्डिनेशन वे, एंड इफ यू डोंट सेट आवर सेल्स इन दैट वे, दिस मीन्स वी मेक बिग मिस्टेक एंड वी कांट अचीव आवर टारगेट। एंड that's why we say education is granted to everybody. Education is achieved, obtained for that purpose. Education itself is a system, itself is a timetable, it's a schedule. You have to get up early morning every day or whatever time schedule is set in. You have to study certain syllabus and certain fixed time. And if you don't study that, you will not get pass. अगर आपको वो हर साल जो पास करना होता है एग्जाम, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, एक टाइम होता है और वो सब करने के बाद आपको पास करना होता है। ये भी एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट है, एक स्केड्यूल है, एक क्षमता है आपको सिखाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप कोई भी काम करें तो क्वालिटी उसमें पहले सोचें, कोऑर्डिनेशन के बारे में पहले सोचें। डोंट स्टार्ट एनी वर्क। अगर आप काम करते भी हैं बिना सोच के स्टार्ट करते हैं, वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। पूरा हो भी जाएगा तो गलत होगा। इफ़ यू स्टार्ट समथिंग इन योर लाइफ एंड यू थिंक इट्स ऑटोमेटिकली accomplished, in that case you are mistaken. Nothing can be done automatically until you are sure that it shall be done. You program it like that. अगर आप उसको ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर की तरह काम अपने आप को बनाना पड़ेगा। You have to make yourself like software only, then you can, and that's not easy. Means you have to understand every point of that software, you have to know every coding of that, and life itself is a requirement because you have to be happy in life, you have to remain happy. If you are only happy, you should be with peace, you should be with tension. If you should be with tension or no tension, you have to decide if you want to stay in tension, what problem you have to face, and if you stay without stress, what you shall get is a benefit. Reliable coordination, reliable quality are therefore very important. And everyone stop sleeping hours, and I would say in our country we are sleeping partners. We should not be sleeping, all are sleeping partners, and that is nonsense because everybody cannot sleep. There may be many activities, many active partners who should work for you and you should work for nation. सब सोते रहेंगे तो काम कैसे होगा? देश के अंदर सबको जागना भी होगा, जागेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। खाली सोने से काम नहीं चलता है, काम दिमाग से चलता है, काम मेहनत से चलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज योर माइंड एंड यू हैव टू यूज फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटी टू डू समथिंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन आर मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। आई कंसिडर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन्स। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि गुणवत्ता क्या होती है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तालमेल क्या होता है। इसको बल्कि मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा डोमेन बनाना चाहिए क्वालिटी का, कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि आज की तारीख में नहीं है। मैं सब सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, व्हेन आई सर्च ऑन इंटरनेट आई डोंट फाइंड कोऑर्डिनेशन अ लॉट, आई डोंट फाइंड क्वालिटी अ लॉट। क्वालिटी सिस्टम इज गिवन टॉक ऑफ, दैट्स नॉट एनफ। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो भी चीज़ खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, अगर उसमें क्वालिटी नहीं होती तो गुस्सा आता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तालमेल नहीं होता तो गुस्सा आता है। कोऑर्डिनेशन सर्विस में नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। इफ यू टेक सर्विस ऑफ समवन, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, यू फील एंग्री, व्हाई आई हैव गिवन जॉब टू दिस पर्सन नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, देन व्हाट्स मीनिंग ऑफ दैट? And this person doesn't get any quality, then what for I am keeping here? And this good product is not good, very expensive, but it doesn't perform in the way it should perform. आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, अगर वो ऐसा काम नहीं करते जैसा करना चाहिए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? You have to decide. और तालमेल से काम नहीं चला तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है? And that's very important point. Quality and coordination, these are very important. I can say everyone of you and myself, we should think of this, and without thinking of real quality and real coordination, life can't move smoothly. वास्तविक गुणवत्ता, वास्तविक तालमेल जरूरी है, बहुत जरूरी है। रियल क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रियल कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन सी वी आर ऑल फ्रेंड्स टुगेदर फॉर ऑल अदर्स। हम सब आपस में मित्र हैं एक दूसरों के लिए। एंड देयर फोर डिमांडेड क्वालिटी, जो डिमांड की गई, जिस जरूरत है क्वालिटी, गुणवत्ता की मिलनी चाहिए। क्वालिटी को मैं कहूँगा, आई शैल लाइक टू टेल क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन, डोंट लीव मी, यू कांट लीव मी बिकॉज यू आर माई डेस्टिनी। माई डेस्टिनी इज़ क्वालिटी। मेरा जो मंजिल है, मेरी जो मंजिल की यात्रा की मंजिल है वो है क्वालिटी, गुणवत्ता।
और वो चलेगी कोऑर्डिनेशन तालमेल से। और हमारे देश की डेस्टिनी जो होनी चाहिए, राष्ट्र की डेस्टिनी जो होनी चाहिए, वो भी यही होनी चाहिए, क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन, जो कि नहीं है। बहुत बुरी बात है कि हम ना क्वालिटी जानते हैं ना कोऑर्डिनेशन जानते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सबको कैसे चलाया जाए? इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल पीपल इन दिस वर्ल्ड, इन आवर कंट्री आल्सो देयर आर मिलियंस इंजीनियर्स हु हैंडल इंजीनियरिंग एंड दे कैन हैंडल दीज फोर डोमेन्स वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इंजीनियर्स आर एनालिटिकल पीपल। अभियंता ही ऐसा वर्ग है जो समझता है हर बात को, किस तरह से काम होना चाहिए, हर चीज़ का वो एनालिसिस करता है, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, टेक्निकल स्टडी बहुत के जो बाकी लोग नहीं करते, मेडिकल्स को छोड़ के। लेकिन एनालिसिस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा होता है, हर स्टेप पे होता है। एनालिसिस के बिना इंजीनियरिंग आगे नहीं बढ़ सकती। इन दिस बोर्ड डोमेन्स एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन क्वालिटी एनालिसिस is required. That's why when you have all answers to all questions and we can synthesize them, we put one chain or string, and that's what the answer is. Your solution lies in both domains, and that is quality domain and in coordination domain. And without this, we cannot get any success. You can say, but engineers can handle you both. Don't worry, we can handle both. Communication, we can handle coordination, we can handle communication and coordination are linked together, and we can say quality we can achieve. Both domains we can work on successfully without causing any problem, without having or giving any problem. And we require to establish both domains permanently. और हम नहीं चाहते कि temporary हो, हम चाहते हैं दोनों domains permanent चलें। दोनों डोमेन परमानेंट चलने चाहिए, नहीं चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। बोथ डोमेन शुड मूव परमानेंटली इन वन गो। There is no difference, there can be no difference accepted in terms of quality and coordination because both have to move together. Real quality is in engineering and real quality engineering and real coordination engineering both are required to वास्तविक गुणवत्ता अभियांत्रिकी और वास्तविक तालमेल अभियांत्रिकी बहुत आवश्यक है, जो डिफाइंड नहीं है, सब्जेक्ट्स में नहीं है। क्वालिटी इंजीनियरिंग कहा जाता है सिस्टम के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। Therefore, we have to think of quality engineering, that's real quality engineering and not fake quality engineering or just you can say imaginary quality. I'm talking of real quality, practical quality. That's quality which is delivered. I'm not talking of imagination. I'm talking of no, we should get it. And from that we have to learn is what was imagination, what was proposal, what was conception, and what we got, what's the difference between two, whether we have got superior or inferior to that one. हमें क्या किया, हमने क्या सोचा था, क्वालिटी हमने गुणवत्ता जो पाई कितनी पाई, हमें कंपेयर करना होता है, उसका मुकाबला करके देखना होता है। हमने जो कल्पना की थी, जो हमने सोचा था कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन दोनों को समझना होता है। वो समझ आएगा हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिला है, हमने क्या सोचा था, क्या किया था। उन दोनों को समझ के आपस में कंपेयर करके हम और सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी तरह से रिलायबल कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग। रिलायबल जब मैं कहता हूँ, रिलायबल मीन्स इस लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, there can be anything added in reliable means you have to depend on that again and again. आपको बार बार निर्भर करना पड़ेगा उस चीज़ पर जो आपने की है, उस वस्तु पर, उस फार्मूले पर, उस सीक्वेंस पे, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग, कोऑर्डिनेशन तालमेल इंजीनियरिंग। अगर आपने तालमेल में एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो वो आपको नुकसान देगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले आपको सोचना होगा जो भी डिटेल्स आपके साथ हैं वो पर्याप्त हैं कि नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क यू हैव टू थिंक ऑन, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वॉट एवर डिटेल्स यू हैव गॉट इन, आर दोज डिटेल्स रादर यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेबल, those are representatives, and those are really required for that work which you are going to do. You have to focus on that, and that focus on doing that one from every angle, every aspect is called a process of coordination engineering. And coordination engineering gives you an answer whether it's not right, whether it is reliable or it's acceptable or constructible, or you can say this is this is going to be becoming. And that's where coordination is. Coordination has got no standard definition. Coordination depends on each activity. किस तरह से तालमेल होगा, ये कोई जर्नल चीज़ नहीं है। ये कैसे होगा, हर बात के लिए, हर वस्तु के लिए, हर फॉर्मूले के लिए, हर प्रयत्न के लिए कोऑर्डिनेशन अलग अलग होता है। आपको सिविल इंजीनियरिंग में काम करना है तो कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, बिल्डिंग में काम करना है, सड़क पे काम करना है, किस पे काम करना है, रेलवे पे काम करना है, आपको सीवर लाइन पे काम करना है, वाटर लाइन पे काम करना है, आपको मशीन बनानी है, मशीन डिज़ाइन करना है, आपको मशीन कैसी करनी चाहिए, आपको बिजली का काम करना है, आपको जो भी काम करना है, इलेक्ट्रिक वट एवर वर्क यू वांट टू डू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन
engineering, road construction, sewer line, water line construction, plumbing construction, or whatever else you want to do. Everything is different, every design is different, every construction is different, everything is different. Factory work is different, industrial work is different, civil work is different, construction work is different. Everything is different. That point we have to understand very well. And that's why coordination, there can be no standard work for coordination. Coordination is something that is expandable to unlimited levels. That point we have to understand very clearly. And coordination is not something as we say we have to do. We have to do it just to be done. There's no other way out. Means how to do coordination. And that's why real coordination is very important. Be working design, it may be manufacturing, it may be construction procedures, it may continuously do assessment of our works, consideration of quality goals in all works. से आपको डिज़ाइन का काम करना है, आपको निर्माण का काम करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का काम करना है, आपको हर चीज़ की असेसमेंट आपको करनी होगी. यही है ज़रूरी जानना. एंड देन वी हैव टू से हाउ टू फिक्स रियल क्वालिटी इन भारत इंडिया. हमारे भारत देश में हमको वास्तविक, हमको रियल क्वालिटी देनी है, हमको गुणवत्ता लानी है, फिक्स करना है उसको. वो फिक्स कैसे किया जाए, वही एक आंसर है, वही एक सोल्यूशन है. हैव टू फिक्स रियल क्वालिटी इन भारत इंडिया. दैट इज़ माई गोल एंड दैट शुड बी माई गोल. How to do it, that's a question mark. That question mark has to be answered very clearly, and that's what say convert may be no excuse for any concession. Quality is a requirement. There can be no answer to that. Other answer. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कम वक्त में कुछ भी क्यों ना हो जाए, नो एक्सक्यूज़ फॉर एनी कंसेशन. कोई भी माफ़ीनामा नहीं है, कोई भी क्षमा याचना नहीं है कि हमें इसमें छूट दे दी जाए. कोई कंसेशन नहीं मिलेगी. क्वालिटी एक आवश्यकता है, क्वालिटी से रिक्वायरमेंट. कम वक्त में नो एक्सक्यूज़ फॉर एनी कंसेशंस. क्वालिटी से रिक्वायरमेंट. वर्क्स क्वालिटी कैन नॉट बी compromised, and therefore we do not intend to compromise just in name of concessions, just in name of, you can say, fragile existing quality system. चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम कम वक्त में no excuse for any concessions. Quality is a requirement. Works quality cannot be compromised. We do not intend to compromise just in name of quality system. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम कोई भी बात नहीं करेंगे. हमें क्वालिटी छोटी है, गिरी हुई है, ख़राब है, इसको ले लिया जाए, इसको मान लिया जाए, ऐसी बात हम नहीं मानेंगे. गुणवत्ता है, वो आपको पूरी करनी होगी. जो भी आपने लिख के दिया हुआ है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से काम करना होगा. वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू वट एवर डिफाइन अवर स्पेसिफिकेशंस, वट एवर एक्सप्लेन वट इज रिक्वायर्ड on a specification of whatever product we are talking of, we have to fulfill that, and that's called quality compliance. वर्क्स क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़. किसी भी काम की गुणवत्ता को हम माना नहीं जा सकता कि अगर सही नहीं है, सही तो करना ही होगा. इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी बात को मानना नहीं है. अगर सही नहीं है तो हम खाली ये नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे. वी डू नॉट इंटेंड टू कॉम्प्रोमाइज़. There is no question of compromise. Whatever work is to be defined or is defined, we have to do it accordingly. We may do super if not inferior. But say superiority is better if we do that, or we can say we can elevate it. Value, we can add value. When as a superior means value can be added. We don't just depend on name of quality system, but we have to produce quality, and that's what's required. Fragile means it's very soft. Existing quality system can be broken. Fragile existing quality system compliance mobility, and its excuse there's a way. Quality system may fail, of course it may fail, but works quality must perform, be delivered. Quality system fail हो जाते हैं, works quality ख़राब हो जाती है, systems काम नहीं करते हैं. Whereas it doesn't happen currently in our country,
entire scenario is now Bharat, India, there is no quality. There is no such something. Everybody is having certificates of quality compliance, but how many people are giving quality? And that's a question. You can survey yourself, and that's what's important. I'm telling everyone means don't depend on certificates of system. You have to check your product. आप खाली इस बात से सामान मत खरीदिए कि क्वालिटी वाली कंपनी है, सिस्टम्स के पास है या ऑपरेट करते हैं, सामान की क्वालिटी देखिए, क्योंकि आजकल झूठ बहुत बोला जाता है. इट्स टाइम टू लाइज, एवरी कंपनी क्लेम्स फॉल्सली. हर कंपनी झूठ बोलती है, दावा करती है कि हमारा सामान क्वालिटी वाला है, लेकिन होता नहीं है. इस बात पे मत आए कि वारंटी दे रहा है. वारंटी एक चीटिंग है अपने आप में, क्योंकि वो वारंटी के चक्कर में 1-2 साल आपको दे देगा, उसके बाद सामान खराब हो जाएगा और वारंटी के कवर में वो आपको बेवकूफ़ बना देगा. Don't depend on warranty exclusively, because warranty is just a security cover, safety cover to cheat customer, because you cannot simply rely on a product which can work only for 1 year for you, because warranty is 1 year, and then you have to spend money on AMC or some other way. And that's what I'm saying. Quality means it should have quality until that product works. It may be many couple of years, or maybe 1 year or 10 years, depends on what product it is. Don't be misled by these people, because these people do not deliver quality because of economizing value of product or cost of product. Do so. ये चाहते हैं हम प्रोडक्ट सस्ता बेच दें कंपटीशन में और कस्टमर ले ले, उसके बाद हमारा काम चलता रहेगा. कस्टमर समझ नहीं पाएगा और फिर नया ले लेगा, उसके बाद फिर नया ले लेगा, चलता रहेगा. That's why compliance formality and its excuse quality system may fail, but works quality must perform, be delivered, whereas it doesn't happen currently in our entire scenario in our country, Bharat, India, and that's why we have to be very serious about this. And that issue is what I'm talking about. The quality system is very important to understand. You cannot just leave it as it is. And that's why you can say, I'm just doing no way journalism, so I can't find quality anywhere, I can't find quality. Quality कहीं नहीं मिली, ढूंढ के थक गया मैं अपने देश में और कई जगह. क्वालिटी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, ये मुझे अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना है, हम सबको क्वेश्चन करना है. क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि हम क्वालिटी नहीं दे पा रहे, इस पर सोचना तो पड़ेगा. क्यों नहीं दे पा रहे, हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा. कोई आके हमें बताएगा नहीं. नो वे जनरली इज एन आंसर that I'm not finding quality, and I'm not unsuccessful to find quality anywhere, unfortunately. Where does required coordination exist? Where is that? कहाँ है वो जो हमें चाहिए coordination, तालमेल, और हम जानते नहीं हैं इसका कैसा होता है. Did you ever find or can you find deliberation? आप सोच सकते हैं, आपने भी सोचा कि हम कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें. और इसी को मैं कहता हूँ कि लाल रेखा है, distinct red line to be resolved. और ये कैसे सॉल्व की जाए. कैन वी ब्रिंग वर्किंग एनवायरनमेंट टू क्वालिटी कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट्स. जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, क्या हमको गुणवत्ता पे उनको तालमेल के पास ला सकते हैं, ला सकते हो तो कैसे ला सकते हैं. दैट्स द पॉइंट. वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो certain questions must be answered. And can we know and apply product and work quality standards complied with overseas, for example in Gulf countries and Middle East countries, or else where quality is maintained on buildings, on plants. हम दूसरे देशों में जहाँ भी काम होता है, जहाँ मैंने भी की हैं, चाहे वो गल्फ़ की कंट्रीज हो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, कोई और कंट्री हो, जहाँ पे क्वालिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन किया जाता था या जाता होगा, चाहे वो बिल्डिंग के काम हो या प्लांट्स फैसिलिटीज़ के काम हो, जगह जगह क्वालिटी देखी जाती है किसी भी स्टैंडर्ड की, किसी भी लेवल की. कैन वी नो एंड अप्लाई प्रोडक्ट एंड वर्क क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंप्लाइड विद ओवरसीज, फॉर एग्जांपल इन गल्फ कंट्री GCC और इन मिडिल ईस्ट और एल्सवेयर, on buildings projects and on plants facilities, which are very big facilities, you can say, where volume of work is too high, and that बहुत काम होता है प्लांट्स पे. मैंने प्लांट्स के बारे में आपसे कई बार डिस्कस किया है. प्लांट दिखाए भी हैं आपको, एथिलीन प्लांट दिखाए और प्लांट दिखाए फ्रॉम गूगल से. यू मस्ट हैव सीन दोज प्लांट्स, एंड दिस आर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. यू कैन से दिस आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमीज. एंड वट एवर मेटल, फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग योर गैस सप्लाई, you are getting your petrol, you are getting your diesel, you are getting your plastics, you are getting your ethane, propane gas, or you are getting so many other products which come only from industrial projects. And these facilities are industrial projects because they are economic based project, and every country earns from that. And these actually, without this process you can't survive. Means that's a very important point here. Chemicals, we are getting organic chemicals, other chemicals, and we are getting many fuels from that product, and we are getting plastics as well. We are getting LNG, LPG, and all that we get. And there are so many projects as such involved which have been done, and so many projects which have been done, they have been on operation for more than many decades. And that's what we say.
दैट वी हैव टू, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमको समझना चाहिए कि प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स कोई छोटा प्लांट नहीं है, किलोमीटर्स बाई किलोमीटर्स के एरिया में बने होते हैं। कैन वी वर्क ऑन रिक्वायर्ड, क्या हम काम कर सकते हैं? कैन वी वर्क ऑन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बेयरिंग एक्टिविटीज़ टू अचीव डिफाइंड एक्सपेक्टेड क्वालिटी प्रोफाइल ऑन वर्क्स? क्या हम क्वालिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, हमको सोचना होगा। क्यों नहीं ले सकते, ये भी सोचना होगा। हमें क्या कमी, जब हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेन पर क्वालिटी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम सीरियस नहीं है। माई आंसर इज ओनली दैट वी डू नॉट वांट टू नो, वी डू नॉट टू लर्न, वी डू नॉट वांट टू बी स्टैंडर्ड पीपल, वी डू नॉट वांट टू बी एक्टिव पीपल, we just want to think that work shall automatically be done. Somebody would come and tell me what to do. We are not pro-initiative, means we are not proactive. You can say rather, can we work on required coordination? This question is, क्या हम जो आवश्यकता है, ज़रूरी है, तालमेल उस पर काम कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है क्वालिटी क्या है, हमें दिया हुआ प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। कैन यू वर्क ऑन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन वेयरिंग एक्टिविटीज़ टू अचीव डिफाइंड और एक्सपेक्टेड क्वालिटी प्रोफाइल ऑन वर्क्स? Why we should not revisit quality required specifications and update पर वर्ल्ड वर्किंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट? हमको क्वालिटी को बार बार समझना होगा। क्या घर में गलत तो नहीं लिखा है? हमको देखना होगा क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे, क्या ये हो क्यों नहीं सकता? क्योंकि अगर उसमें स्पेसिफिकेशन दी है तो होना भी चाहिए, नहीं तो स्पेसिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इफ समथिंग इज स्पेसिफाइड इन आवर डॉक्यूमेंट्स फॉर वर्क, देन दैट स्पेसिफिकेशन मस्ट वर्क. Otherwise, there exists no meaning. If you just write a specification and it can't be implemented, then this is self-deception, and this is deception to that worker who doesn't understand what's written, but that worker wants to do its way, and that's what it says. Specification definition is a must. What's the limit of work you have to do? What is quantity limit and what is quality limit? What level you want to get it? There can be categorization of that, but specification is a must, and specification is actually requirement of quality. And if you don't have specification, आपको उसकी डिटेल्स नहीं है स्पेसिफिकेशन की, इसको कैसा करना है, तो आप क्वालिटी अचीव कर ही नहीं सकते। जो भी लिखिए उसमें होनी चाहिए, वट एवर लेवल इज डिफाइंड, वट एवर एलोपरेशन इज गिवन, वट एवर पैरामीटर्स आर गिवन, वी हैव टू अचीव दोज पैरामीटर्स, एंड दैट्स व्हाट वी कैन से स्पेसिफिकेशन अचीवमेंट. Can we work on required coordination bearing activities to achieve defined or expected quality profile? Why we should not revisit quality required specifications or update for world working standards requirement? Yeah, I explained to you means we have to understand everything about quality specification. The specification itself is a quality. It tells you what you have to do, and that's very important point. Why should we not apply work relational coordination required? हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते कोऑर्डिनेशन को, जो वर्क के बारे में जिसका रिश्ता है? वो कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं काम करने का, काम का, और एक कोऑर्डिनेशन का एक रिश्ता होता है, इस कॉल्ड रिलेशन, वर्क रिलेशन. और ये रिलेशन इतना मजबूत है जिसके बिना आप आगे नहीं चल सकते. अगर चलेंगे तो गिर जाएंगे, काम गलत कर देंगे. वाई शुड वी नॉट अप्लाई वर्क रिलेशनल एक्ट कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट इज मस्ट लेवल सॉल्यूशन. Yes, we have to understand this point. We have to move forward, and considering that we have to achieve this target. And if you can't, अगर हम उसको मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारा होना या ना होना प्रोफेशन में बराबर है. हम कुछ नहीं सीखना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते. दैट इज़ आवर प्रिंसिपल विच इज़ बैड वन. वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्टिविटी. हमें हर काम से सीखना होता है, क्योंकि हम गलतियाँ भी करेंगे. हम नहीं कह सकते हम गलती नहीं करेंगे, गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे भी, लेकिन एक बार गलती हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती. वी हैव टू कीप दैट माइंड इन माइंड. सो वंस यू मेक ए मिस्टेक, देन यू इज लर्निंग लेसन, मीन्स यू लेसन इज लर्न. दैट लेसन शुड नॉट बी लर्न अगेन, because if we learn again, this means we are not serious, and that's why question is seriousness. हम गंभीर नहीं हैं, गंभीरता हमारे अंदर नहीं है. और क्यों नहीं है, ये भी एक उठता है प्रश्न. हम सोते रहते हैं, हम बात को सीरियसली नहीं लेते. वी डू नॉट टेक सीरियसली वट एवर वी लर्न, एंड वी फॉरगेट और वी इग्नोर इट. हम भूल जाते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रियली वी हैव सर्टेनली वर्सनिंग स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क्स. हमारी क्वालिटी इतनी गंदी है, इसको हम कह सकते हैं सबसे गंदी है. हम अपने आप को गंदा समझे, बहुत गंदा, तब भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे. वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू क्रिटिसाइज आवर वर्क्स आवरसेल्व्स. We have to criticize our performance ourselves. We have to self-examine. We have to self-learn. Because don't depend upon somebody would come and let you know. No, nobody would come. Don't expect anybody to come to you to let you know what you have to do, because you have to do yourself. You are an engineer, you are not an engineer. It doesn't matter as far as you are serious. You have work experience, and you know what experience is right or not, because that work quality is written somewhere, specification is written somewhere, and you have to discover it, find it, search it, and apply that. And if you can apply that one, certainly, if it's right
right specification, you shall get right results. आपकी स्पेसिफिकेशन सही है तो आपको सही आंसर तो मिलेंगे ही. इट्स नॉट ए मस्ट हैव सोल्यूशन, यस इट इज अ सोल्यूशन रियली वी हैव सर्टेनली, पक्के रूप से, पक्की मजबूती के रूप से हमको आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा. वर्सनिंग स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क्स शुड गो एंड हाउ टू इम्प्रूव सच मैंडेटेड वर्क्स क्वालिटी, दैट्स क्वेश्चन मार्क, टू सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स एटलीस्ट टू मैच विद मिनिमम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स. हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि आजकल हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सबकी अपनी स्पेसिफिकेशन है, बट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशन विच अप्लाई एवरीवेयर, इवन दो यू डोंट रेफर दैट, बट दैट अप्लाइज इन दैट्स प्रोसीजर्स. And that's why should we not force ourselves? We have to force ourselves. We have to correct ourselves. We have to force ourselves to work on coordination in each activity. हमें तालमेल पे काम करना ही होगा हर कार्यक्रम में. अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं. इसलिए वर्सनिंग स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, हाउ टू इम्प्रूव सच मैंडेटेड क्वालिटी टू सर्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड, कैसे हम इसको समझें, हमारी जो इतनी बुरी हालत है क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, उसका सुधार किया जाए, उसको कैसे एक ऐसा बनाया जाए कि आपको ये करना ही होगा, ये ज़रूरी है. और उसको जो भी मार्क्स है, मिनिमम लेवल है, उसको डिफाइन करना होगा, ये भी बहुत आवश्यक है. कंक्रीट कंपोनेंट इन कंस्ट्रक्शन अमाउंट्स टू मेजर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. हम जानते हैं कंक्रीट एक बहुत बड़ा मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है, हर प्रोजेक्ट पे लगता है. देयर इज़ नो प्रोजेक्ट, देयर कैन बी नो प्रोजेक्ट, वी कैन नॉट फाइंड एनी प्रोजेक्ट कंक्रीट इज़ नॉट यूटिलाइज. कंक्रीट मीन्स मिक्स ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट यूटिलाइज. कंक्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक्सपेंसिव मटेरियल, पावरफुल मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल, and without this we cannot even do any project, and that's fact of life. It may be precast technology, it may be pre-stress technology, cast and structural technology, or whatever else. Without concrete knowledge, without concrete understanding, we cannot do anything. And that's why concrete is very, very important. And we say concrete component is in construction among to major percentage of cost. Therefore, it becomes incumbent on us to create about quality of such. Quality is important here because we manufacture ourselves, whether in batching plant or on site, we manufacture concrete ourselves, and we use raw materials. We in certain proportion, we add them, and we add cement or equivalent cement and put water in that, so the concrete is produced by mixing. And that's why there are chances of there are many chances of variation in quality because of various sizes of aggregate and various you can say various proportions, and whether or not mix is workable or not, that also depends on that. We have to see so many factors in concrete. It's not single factor. So many factors means how strong it is, what strength of concrete, what's compression resistance, what is tension resistance, and what is its composition, what's void ratio, and what's porosity, and what is, you can say, water tightness, and all these we have to understand in this your concrete specifications. And concrete specification कितनी मजबूत है concrete, वो कितनी दबाव लेती है, कितना तनाव लेती है, कितनी इसके अंदर खाली जगह या voids हैं, और ये किस तरह से पोरोसिटी लेगी, पानी लेगी, नहीं लेगी, पानी बहने देगी, नहीं बहने देगी, बहुत सी बातें जो हमको समझ करनी होती है. एंड दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रोफेशनल में समझना चाहिए. कोई इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता. अब हम कॉन्क्रीट के पास जाते हैं और देखते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो कितना हद तक सही है. बहुत ज़रूरी होता है वो समझना. इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड द वेस्ट टाइम, एंड दैट्स कॉन्क्रीट स्पेसिफिकेशंस हियर इन समवेयर आई थिंक ऑन पेज 320 आई थिंक. We don't talk about slump, right? Where were we actually last time? Mass unit of volume we were, water cement ratio. When determining water cement ratio based on compressive strength of concrete, procedure shall conform to section whatever materials and construction. When determining water cement ratio based on resistance of concrete to freezing and thawing, you can say action ratio should be 5% lower than used in ordinary aggregate. And when determining water cement ratio based on water tightness, we can say concrete ratio should be 55% lower. Well, I think it was some other page, I am sure. It was general lightweight aggregate we had gone through, I am sure. And lightweight aggregate, where I'm not finding that page really. Let us see which is slump. And then air content. This portion I think we had gone through. Next portion we had gone through this one. Yes, we had gone through. Notes for red as well. Mineral admixtures with positive and negative activity of latent hydraulicity are used. The water wind ratio should be used instead of water cement ratio as an indicator of resistance to materials aggregation. Unit amount of fine powder should be presented as a combined total for cement and admixtures. When several materials of same category are used, they should be detailed separately.
fine and coarse aggregates should be presented in separate columns for lightweight and ordinary aggregates. Quantity of lightweight aggregate per unit volume of concrete should be presented as mass of an oven dry condition. Quantity of ordinary aggregate per unit volume of concrete should be presented as mass in a surface dry condition. The commentary is, let us say what it says, because we had gone through it last time. Mass of lightweight aggregate varies greatly according to moisture state of aggregate. Mass of lightweight aggregate varies greatly according to moisture state of aggregate. In mixed proportion, therefore, mass in mixed proportion, we can say, therefore, mass in an oven dry condition should be presented unlike for ordinary aggregate over dry condition. We say in mixed proportion, therefore mass in over dry condition should be presented unlike for ordinary aggregate. When both lightweight and ordinary aggregates are used simultaneously, quantities of respective types of aggregates per unit volume of concrete should be presented. Now, types of structure: characteristics, compressive strength, mixed proportion strength, mass per unit volume used in design, types of cement, fine and coarse aggregates, type of chemical admixtures are also desirable to be described in table that we have shown to you. This table, as you have seen here, long table which we referred to yesterday, representation of mixed proportion, and batching when lightweight aggregate is used under dry condition, correction related to effective water absorption should be conducted. Also, when lightweight aggregate is used under surface water content, amount of pre-wetting should be concerned, and corrections related to surface water content be conducted. In a format of field mix proportion, not only bulk density but also water absorption, surface water contents of both fine and coarse aggregates, and mixed proportions strengths are preferably to be provided. Production and construction, selection of plant. Now we are coming to next one, production and construction. For producing lightweight aggregate concrete, a plant producing lightweight concrete products that has been officially authorized, or a plant with equivalent production facilities and management system should be selected considering time required for transport to site, concrete shipping capacity and quality organizational capacity. Ready-mix concrete plants have varying production facilities. Ready-mix concrete plants have varying production facilities, production technology and quality organization capability. Lightweight aggregate, we can say lightweight aggregate. My God, why people are disturbing, I don't understand. Unnecessarily they are disturbing. Ready-mix concrete plants have varying production facilities, producing technology and quality management capability. Lightweight aggregate concrete should be purchased from a plant that manufactures lightweight concrete products and conducts inspection in conformity with uniform inspection standard. Very fool, who is this yaar? He doesn't understand I'm busy. He doesn't understand I'm busy. Nonsense. What to do with such people? And just talking and speaking and just for nothing, people calling. They can't send messages. Ready-mix concrete plants have varying production facilities, production technology and quality system capability. Lightweight aggregate concrete should be purchased from a plant that manufactures lightweight concrete products and conducts inspection in conformity with uniform inspection standards established by NAMACON, Ready-Mix Concrete Quality Control Inspector Conference of Japan, that is NAMACON, and has been officially authorized. In cases where no plants produce these products that can be transported to construction site within designated time, a production plant should be selected for which it has been verified in testing that it can steadily supply concrete of designated quality, considering production facilities, quality management system, and expertise concerning lightweight concrete.
कंक्रीट लाइट वेट हमको देना है, एक अलग सी बात है, अलग सी चीज़ है कि लाइट वेट कंक्रीट के पर्पस दूसरे हैं, हम जानते हैं, और ये बात वही आती है कि किस तरह से बनाया जाए, सप्लाई की जाए साइट पे, इसका टाइम को रखना है, सब कुछ रखना है। इससे इज देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट के जो एग्रीगेट छूरा है उसको कैसे ले जाया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। कोर्स एंड फाइन लाइट वेट एग्रीगेट्स बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। जो कोर्स एग्रीगेट हैं, पत्थर का है, जो पत्थर कह सकते हैं, पत्थर का चूरा, या फाइन लाइट वेट हल्की वाली डस्ट या सैंड। कोर्स एंड फाइन लाइट वेट एग्रीगेट बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। लाइट वेट एग्रीगेट बी हैंडल्ड टेकिंग केयर टू अवॉइड क्रशिंग को बचाना है, टेकिंग केयर टू अवॉइड क्रशिंग। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग पार्टिकल्स को हमें ध्यान रखना होगा, वो क्रश ना हो पाएँ, उनके पार्टिकल्स अलग अलग ना हो पाएँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, और उनकी मिक्सिंग नॉर्मल एग्रीगेट के साथ इस तरह होनी चाहिए। So we can say coarse and fine lightweight aggregate shall be transported and stored separately. Lightweight aggregate shall be handled taking care to avoid crushing. Separation of particles of different sizes and being mixed with normal aggregate, dirt and foreign matter. To produce a uniform quality of concrete. concrete की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, एक सी आए, उसकी जो ग्रेडिंग है वो वैसे ही रहे जैसे हमने मिलाई थी। तो प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मस्ट बी कांस्टेंट। फॉर दिस रीज़न कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स रिक्वायर टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। इसी कारण बस दोनों तरह के जो एग्रीगेट हैं, डस्ट है या पत्थर वाला है, हल्के पत्थर का चूरा, वो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट सही होनी चाहिए और सही तरह से उनको स्टोर किया जाना चाहिए। फॉर दिस रीज़न कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स रिक्वायर टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली सो दैट एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस डू नॉट मिक्स। दोनों फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट मिक्स नहीं होने चाहिए, आपस में अलग अलग ही रहने चाहिए। When transporting lightweight aggregate to construction site, it is necessary to use a rubber tire vehicle as aggregate will be broken if other types of transportation such as caterpillar, bulldozer, excavator etc. are used. ये दोनों एग्रीगेटों को हमें टायर वाली व्हीकल से ही लेके जाना होगा, क्योंकि हम इनको और क्रश नहीं कर सकते, क्रॉलर माउंटेड नहीं लेके जा सकते या दूसरी बुलडोजर एक्सकेवेटर नहीं लेके जा सकते। When transporting lightweight aggregate to construction site, it is necessary to use a rubber tire vehicle as aggregate will be broken if other type of transportation such as you can say caterpillar, bulldozer, excavator etc. are used. Mix of broken aggregate results in non-uniform quality concrete and required strength not be obtained. Lightweight aggregates are often stored in open air, but when stored in conical heaps, large grains and small grains tend to become separated. बहुत important point है, lightweight aggregate are often stored in open air, but when stored in conical heaps, large grains and small grains tend to become separated from each other. Conical में अगर आप रखेंगे शेप में तो मुश्किल है। It is suggested that aggregate should be stored in cylindrical silos or be enclosed in bivalves or in order to keep them level horizontally. When a belt conveyor is used to convey lightweight aggregates, care requires to be exercised not to make inclination too steep and to clean conveyor after conveying river sand to prevent river sand from mixing with lightweight aggregate. अगर आपने बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करना है इनको लाइटवेट एग्रीगेट को कन्वे करने के लिए, इसमें ध्यान देना होगा कि हम उसको इंक्लाइन ज़्यादा ना करें, ज़्यादा
एंगल पे ना लें और उसके लिए उस कन्वेयर को साफ़ कर दें उसका इस्तेमाल करने के बाद में, to prevent river sand from mixing with lightweight aggregate. When a belt conveyor is used to convey lightweight aggregate, care requires to be exercised not to make inclination too steep and to clean conveyor after conveying river sand to prevent river sand from mixing with lightweight aggregate. Control of moisture content of lightweight aggregate, उसके पानी को कितना कंटेंट है पानी का, उसको कैसे ध्यान रखा जाए. कंट्रोल ऑफ नियंत्रण कैसे किया जाए पानी, इसके अंदर जो पानी की क्षमता, पानी है जितना भी, मॉइस्चर क्या कहते हैं मॉइस्चर हिंदी में, कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए. मॉइस्चर कंटेंट इन लाइट वेट एग्रीगेट शैल बी मेंटेन्ड एट ए प्री डिटरमाइंड लेवल. मॉइस्चर जो है कितना उसके अंदर पानी है, पानी का अंश है उस एग्रीगेट में जो हल्के वजन का है, उसको किस लेवल पर रखा जाए. मस्ट बी नोन. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इन लाइट वेट एग्रीगेट शैल बी मेंटेन्ड एट ए प्री डिटरमाइंड लेवल. Moisture content of lightweight aggregate in case of pre-wetting shall be determined considering possibility of pumping transportation, conditions of pumping, freeze thaw resistance. As lightweight aggregate tends to absorb water more easily than ordinary aggregate, जो हल्के वजन के एग्रीगेट हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं बनिस्बत उसके जो भारी हैं, जो आपके 2400 किलोग्राम के हैं वो पानी कम लेते हैं. लेकिन जो लाइट वेट है 1800 के, 1900 के, 1600 के, 1700 किलोग्राम पर मीटर वो पानी ज़्यादा लेते हैं. As lightweight aggregate tends to absorb more water easily than ordinary aggregate, concrete quality tends to vary during mixing, transportation and placing. It is better to use them in thoroughly wet conditions. जो भी आपके लाइट वेट है उसको गीले में कीजिए. इट इज़ बेटर टू यूज़ देम इन थारोली वेट कंडीशन. पर प्री सोकिंग ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट रिक्वायर्स टू बी एनफ व्हेन पंपिंग लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट. व्हेन कॉन्क्रीट पंप इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट ओनली, कंट्रोलिंग मॉइस्चर कंटेंट इन सच ए वे that it hardly varies at departure from a production factory is necessary. Lightweight aggregate that is largely pre-soaked at production factory is used to prevent water absorption during pumping. In these cases, it is important to control moisture content during storage of aggregate by providing a water spraying device such as sprinkler so that lightweight aggregate does not become dry in concrete plant. हल्के वज़न के जो भी हमारे एग्रीगेट हैं वो हमको पानी डाल के रखनी चाहिए ताकि उनकी पानी की आवश्यकता उस टाइम पूरी रहे और वो उस पानी को ना ले लें, वो वैसे ही रहें उस गीली अवस्था में, जिससे कि हमारी कंक्रीट बन जाए, तैयार सही हो जाए. सूखा ना रहे ये एग्रीगेट, क्योंकि सूखा रहेगा तो ये पानी कंक्रीट का भी ले लेगा. क्या कहते हैं, इन दिस केसेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट बाय प्रोवाइडिंग ए वाटर स्प्रेइंग डिवाइस सच एज स्प्रिंकलर. वहाँ स्प्रिंकलर लगा दें, पानी गिरता रहेगा, सो दैट लाइट वेट एग्रीगेट डज नॉट बिकम ड्राई इन कंक्रीट प्लांट. लाइट वेट हल्के वजन के हमारे जो एग्रीगेट हैं उसको हमें सूखा नहीं होने देना है, हमें गीला करके ही इस्तेमाल करना है. It is possible for lightweight aggregate with lower water absorption capacity to be used under dry condition. ये संभव है, हमारा जो एग्रीगेट है जो कम पानी लेता है, लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का है, उसको हम सूखी अवस्था में यूज़ कर सकते हैं. It is possible for lightweight aggregate with lower water absorption capacity to be used under dry condition since change of properties during mixing, transportation and placing is small because of its having lower water absorption, and also water absorption due to pressure is small as well. In these cases, moisture content of lightweight aggregate that is stored under dry condition
may be controlled so as to be constant. I repeat, it is possible for lightweight aggregate with lower water absorption capacity to be used under dry condition. Since change in properties during mixing, transportation and placing is small, and also water absorption due to pressure is small as well, in these cases moisture content of lightweight aggregate is that's stored under dry condition may be controlled so as to be constant. Unless moisture content of lightweight aggregate is uniform, unless moisture content of lightweight aggregate is uniform, control of weighing mixing water becomes difficult. Unless moisture content of lightweight aggregate is uniform, control of weighing mixing water becomes difficult. Moisture content must be controlled so as to maintain a uniform value not only in pre-soaking aggregate but also in storage. Place of storage must be such that aggregates are protected from rain and sunshine and well drained. Also, volume of storage facility shall be sufficient to store an enough amount of aggregate for one day consumption. Generally use of lightweight aggregates containing excessive water shall adversely affect quality of concrete by increasing density or by reducing freeze and thaw resistance. As adequate pre-wetting is required when pumping lightweight aggregate concrete. Resistance of lightweight aggregate concrete to freezing and thawing action is generally reduced. Resistance of lightweight aggregate concrete to freezing and thawing action is generally reduced when constructing lightweight aggregate concrete that is subject to alternative freezing and thawing in cases where absorption of aggregate is not an issue. In a series of work from concrete mixing to placement, reducing water content of lightweight aggregate and constructing concrete using buckets should be considered. When constructing lightweight aggregate concrete that is subject to alternative freezing and thawing, in cases where absorption of aggregate is not an issue, in a series of work from concrete mixing to placement, reducing water content of lightweight aggregate and constructing concrete using buckets should be considered. Mixing. Sequence of charging materials into mixer shall be determined considering efficiency of mixing and water absorption by aggregate during mixing. Sequence of charging materials into mixer shall be determined considering efficiency of mixing and water absorption by aggregate during mixing so as to ensure that lightweight aggregate concrete meets required performance. Duration of mixing should in principle be determined through tests. Sequence of introducing lightweight aggregate concrete materials into mixer has a large effect on mixing efficiency. Sequence of introducing lightweight aggregate concrete materials into mixer has a large effect on mixing efficiency. Degree of water absorption of aggregate in mixer and like.
Duration of mixing should in principle be determined through tests. Duration of mixing should in principle be determined through tests. Right? It's very important actually. This subject is very important and we have to be very serious about this because this is concrete. Now what are you saying commentary on this talk, and that is mixing. In mixing it says sequence of introducing lightweight aggregate concrete material into mixer has a large effect on mixing efficiency, degree of water absorption of aggregate in mixer and like. कैसे सीक्वेंस बनाया जाए हल्के वजन के एग्रीगेट का हमें मिक्सर में डालने के लिए, किस तरह से मिक्स किया जाए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन एग्रीगेट का कितना हो, ये सब देखना है. सीक्वेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट मटेरियल्स इनटू मिक्सर हैज़ ए लार्ज इफेक्ट ऑन मिक्सिंग एफिशिएंसी, degree of water absorption of aggregates in mixer and like. When using dry lightweight aggregate with high water absorption capacity, when using dry lightweight aggregate with higher or high water absorption capacity, materials in mixer absorb a considerable amount of water. Materials in mixer absorb a considerable amount of water, causing variation in quality of concrete, such as slump or strength. Therefore, care must be exercised in their use. काफ़ी पानी ले सकता है ये एग्रीगेट, मिक्सिंग के टाइम काफ़ी पानी ले सकता है और जिससे कंक्रीट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, वेरिएशन आ सकती है, स्लम्प बढ़ सकता है, स्लम्प स्ट्रेंथ कम हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है. When using dry lightweight aggregate with high water absorption capacity, materials in mixer absorb a considerable amount of water, causing variation in quality of concrete, such as slump or strength. Care must be exercised in respective use. As mixing efficiency of lightweight aggregate concrete differs greatly, depending on type of aggregate, consistency of concrete, type of mixer, capacity of mixer and like, required mixing time is specified and determined mainly by tests, whatever tests are given. And that is method of test for variability of constituents in freshly mixed concrete. Standard mixing time be not less than 1 minute in case of forced mixing type mixer, and not less than 2 minutes in case of tilting type mixer after all materials have been introduced into mixer. 1 minute in fast one and 2 minutes in light one. As mixing efficiency of lightweight aggregate concrete differs greatly depending on type of aggregate. Mixing efficiency of lightweight aggregate concrete differs greatly depending on type of aggregate, consistency of concrete, type of mixer, capacity of mixer and like. Required mixing time is specified and determined mainly by test, method of test for variability of constituents in freshly mixed concrete. Standard mixing time shall not be less than 1 minute in case of forced mixing type mixer and not less than 2 minutes in case of tilting type mixer after all materials have been introduced into mixer. When a gravity type mixer is used, mixing of lightweight aggregate concrete becomes ineffective compared with ordinary concrete, depending on type of mixer. Therefore, minimum mixing time may be extended when tests are not performed. When type of mixer and method of use are adequate and mixing performance can be confirmed by tests, mixing time shall be same as in case of ordinary concrete in case of using a small tilting type mixer
at construction site because concrete may adhere to inner wall of mixer, lowering mixing efficiency. It is suggested that sequence of introducing materials and mixing time should be determined by tests. If reliable documents or records are available, they may be consulted. So we have to understand by this. जब हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी टाइप का मिक्सर, ये जो लाइट वेट एग्रीगेट हैं ये इनफेक्टिव हो जाते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट से. व्हेन ए ग्रेविटी टाइप मिक्सर इज यूज्ड, mixing of lightweight aggregate concrete becomes ineffective compared with ordinary concrete, depending on type of mixer. Therefore, minimum mixing time may be extended when tests are not performed. When type of mixer and method of use are adequate and mixing performance can be confirmed by tests, mixing time shall be same as in case of ordinary concrete. In case of using a small tilting type mixer at construction site, because concrete may adhere to inner wall of mixer, lowering mixing efficiency, it is suggested that sequence of introducing materials and mixing time should be determined by tests. If reliable documents or records are available, these may be consulted. Transportation within construction site. Transportation within construction site. When lightweight aggregate concrete is transported using concrete pumps, it should be superplasticized concrete or concrete using high range water reducing agents. Water reducing agents as standard. For use of lightweight aggregate having larger water absorption, water content of aggregate should be reduced and buckets should be used for transporting concrete to ensure frost resistance. There are 2 points. One is when lightweight aggregate concrete is transported using concrete pumps, it should be superplasticized concrete or concrete using high range water reducing agents. Water reducing air entraining agents as standard. For use of lightweight aggregate having larger water absorption, water content of aggregate should be reduced and bucket should be used for transporting concrete to ensure frost resistance. क्या कहते हैं? सुपर प्लसेस कंक्रीट यूज करेंगे. व्हेन लाइटवेट एग्रीगेट कंक्रीट ट्रांसपोर्ट यूजिंग कंक्रीट पंप्स, इट शुड बी सुपर प्लास्टिसाइज्ड कंक्रीट और कंक्रीट यूजिंग हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग air entering agents. For use of lightweight aggregate having larger water absorption, water content of aggregate should be reduced and buckets should be used for transporting concrete to ensure frost resistance. It is possible to transport lightweight aggregate concrete by a concrete pump when concrete of slump ranging from 80 to 120 mm is superplasticized so that slump is increased to about 180 mm. Lightweight aggregate concrete in which high range water reducing air and thinning agent is added at mixing may be also used for pumping. However, use of lightweight aggregate and insufficient pre-wetting may cause blockage in conveying pipe because of increasing frictional resistance of concrete in pipe due to large amount of water absorption by aggregate under high pressure. Self-compacting concrete may be used with careful attention to mixture proportion so that it doesn't cause segregation of lightweight aggregate. In this case, you can see high fluidity concrete. So I read it again for reference. It's possible to transport lightweight aggregate concrete by a concrete pump when concrete of slump ranging from 8 to 12 centimeter is superplasticized, so that slump is increased to about 180 mm.
Lightweight aggregate concrete in which high range water reducing air and thinning agent is added at mixing may be also used for pumping. However, use of lightweight aggregate with sufficient pre-wetting may cause blockage in conveying pipe. Blockage in conveying pipe because of increasing frictional resistance of concrete in pipe due to large amount of water absorption by aggregate under high pressure. Self-compacting concrete may be used with careful attention to mixture proportion so that does not cause any cause segregation of lightweight aggregate. In this case, then there remains air void in lightweight concrete. Lightweight aggregate, there remains air voids in lightweight aggregate not absorbing water after pre-wetting. When pumping concrete, slump should be set slightly high and discharge should be reduced to prevent pressure in pipe from increasing. In case when concrete pump is used for transporting lightweight aggregate concrete, recommended practice for concrete with high range water reducer with AE effect, then we can say specification of self-compacting concrete be referred to lightweight aggregate concrete with pre-wetted aggregate, lightweight concrete with pre-wetted aggregate shows less frost resistance in cases where there exists no problem on absorption of aggregates during mixing and placing. For construction with lightweight aggregate concrete subject to freezing thaw cycles, water content of aggregate should be reduced and bucket may be used for transporting concrete to ensure frost resistance. Placing and compaction. Placing and compaction of concrete shall be placed taking into account floating up of lightweight aggregate and using methods that ensure least segregation. Avoiding segregation is a must. Concrete shall be placed taking into account floating up of lightweight aggregate and using methods that ensure least segregation. When internal vibrator for lightweight aggregate concrete is used, an appropriate method shall be selected with due consideration of thickness of each compacted layer, duration of vibration, spacing intervals between vibrated point sector. Segregation of lightweight aggregate concrete occurs because coarse aggregate tend to float and mortar tends to sediment, which is reverse tendency to that of normal weight concrete. Segregation of lightweight aggregate concrete occurs because coarse aggregate tend to float and mortar tend to sediment, which is reverse tendency to that of normal weight concrete. When consolidating lightweight aggregate concrete using an internal vibrator, effective consolidation range is therefore when consolidating lightweight aggregate concrete using an internal vibrator, effective consolidation range is small than for normal weight concrete, and tendency of concrete to extend to corners of formwork and around reinforcing bars by dead weight is weak. Therefore, concrete shall be consolidated thoroughly by making insertion intervals of vibrator shorter
says, therefore, concrete shall be consolidated thoroughly by making insertion intervals of vibrator shorter and duration of vibration slightly longer. However, care must be exercised during vibration. Care must be exercised during vibration. Now, during vibration of coarse aggregate may tend to float. Surface finishing. We'll be back in this surface finishing case. We have to see it's a very important point, and we'll confine on this. And after a couple of moments, we'll see how to do it rapidly, efficiently, surface finishing. And we have to see that. Just in a couple of minutes, because I had to go on proof for feeding birds, and it is important point for everyone. So we can just back.
Surface finishing, that is important point. We have to see surface finishing. We have to move a long way distance here. Surface finishing, we are talking when finishing a surface of concrete, floated coarse aggregate shall be pushed back into concrete. As there may be cases where lightweight coarse aggregates float to surface, becoming subject of deterioration due to weather conditions and mechanical action, concrete should generally be finished in such a way that floated coarse aggregate are pushed back. Concrete should generally be finished in such a way that floated coarse aggregates are pushed back into mortar. In this case, care must be exercised not to increase bleeding significantly as a result of excessive finishing operations. To finish surface smoothly, it is suggested that refinishing should be performed after an adequate time has elapsed. When lightweight aggregate concrete is unused in floor slab, micro cracking tends to occur in a tortoise shell pattern 30 minutes to 1 hour after finishing. It is necessary to remove such micro cracks by lightly striking using a tamper and like about 1 hour after initial surface finishing. When excess bleeding water is generated after placing concrete in winter, it is recommended to remove bleeding water properly and surface should be finished in such a way as mentioned above. So I repeat, as there may be cases there may be cases where lightweight coarse aggregate float to the surface, becoming subject of deterioration due to weather conditions and mechanical action. Concrete should generally be finished in such a way that floated coarse aggregates are pushed back into mortar. In this case, care must be exercised not to increase bleeding significantly as a result of excessive finish operations. To finish surface smoothly, it is suggested that refinishing should be performed after an adequate time has elapsed. It is suggested that refinishing should be performed after an adequate time has elapsed. When lightweight aggregate concrete is used in a floor slab, micro cracking tends to occur in a tortoise shell pattern 30 minutes to 1 hour after finishing. Therefore, it is necessary to remove such micro cracks by lightly striking using a tamper and like about 1 hour after initial surface finishing. When excess bleeding water is generated after placing concrete in winter, it is recommended to remove bleeding water properly and surface should be finished in such a way as mentioned above. Inspection for acceptance of lightweight aggregate, and that's what it says.
says about inspection for acceptance of lightweight aggregate. Accepting party, acceptance shall be held responsible for conducting acceptance tests of lightweight aggregates. This table, inspection for lightweight aggregate, is very simple. Item, that is item related to quality, and moisture content, that is testing method, inspection method, that is confirmation, first case item related to quality, confirmation based on test results provided by manufacturer, and moisture content according to specifications or code. Period, frequency is before start of construction, that is quality we have to be sure before start of construction, and once a month during construction. Moisture content at least once a day. Criteria for judgment, compliance and falling within range given in construction plan. Accepting party or engineer conducting acceptance test for lightweight aggregate is producer of lightweight aggregate concrete. Result of acceptance test shall be confirmed by owner of structure or engineer, you may say, because owner has to accept everything ultimately, but technical acceptance is done by engineer. It is important to exercise proper quality control for lightweight aggregate to ensure that lightweight aggregate concrete which meets required properties is manufactured and constructed. Lightweight aggregate that is prescribed for concrete for structural use. Quality control for lightweight aggregate shall be exercised for items. Since artificial lightweight aggregate for concrete for structural use is normally controlled better than natural aggregate, data sheet of test results submitted by production company may be used for quality control like cement. हमें लाइटवेट एग्रीगेट का टेस्ट करना होता है. टेबल से पहले जो बताया आपको लाइटवेट एग्रीगेट का टेस्ट कैसे किया जाए, प्रोसीजर जो भी हो, स्ट्रक्चरल यूज़ के लिए हम कर रहे हैं लाइटवेट एग्रीगेट, तो इसको हमें आर्टिफिशियल अगर जो एग्रीगेट हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे बजाय नेचुरल के, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइटवेट एग्रीगेट नॉर्मली कंट्रोल किए जाते हैं अच्छी तरह से, बेटर देन उससे अच्छी तरह से जैसे हमें प्राकृतिक एग्रीगेट होते हैं. तो ये एक इंडिकेशन है लाइट वेट एग्रीगेट फॉर कंक्रीट फॉर स्ट्रक्चरल यूज़. क्वालिटी कंट्रोल फॉर लाइट वेट एग्रीगेट शैल बी एक्सरसाइज्ड फॉर आइटम्स. Since artificial lightweight aggregate for concrete for structural use is normally controlled better than natural aggregate of data sheet of test results submitted by production company, it can be used. The water content of lightweight aggregate used for concrete plays an important role. कितना पानी उस lightweight aggregate में है, ये बहुत आवश्यक है जानना. Water content of lightweight aggregate used for concrete plays an important role not only for production of consistent quality of concrete but also for transportation such as pumping and placing. पानी कितना उसके अंदर है एग्रीगेट में, इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसकी पंपिंग कैसे होगी. केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ प्री वेटिंग बिकॉज वाटर कंटेंट इज लाइकली टू वेरी. ध्यान देना होगा अगर हम पहले पानी डालते हैं उसमें, क्योंकि वाटर कंटेंट कंक्रीट का चेंज होगा, वेरी करेगा. देन क्वालिटी कंक्रीट फॉर वाटर कंटेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट. टेस्ट फॉर वाटर कंटेंट शैल बी कैरिड आउट वंस पर डे और मोर, सिमिलर टू number of tests for surface saturation of aggregate. It's difficult to specify uniform standard judgment for test results on water content. However, standard of water content can be specified by considering conditions for transporting concrete and consistent quality. It can be controlled within range of plus